Serving our country is just a dream. But for Captain Naveen Nagappa, born on 5th September 1973, it became a way of life. He hails from Hubli, Karnataka. He did his schooling from Lions English Medium School, Hubli, and his pre-university course from PC Jabin Science College, Hubli. He is an engineering graduate in mechanical engineering from Bapuji Institute of Engineering and Technology, Davangere. His parents desired that he should go abroad for his higher studies. Reluctantly, he appeared for his GRE and TOEFL exams. He did reasonably well in these exams and could have easily gone to USA to pursue his higher studies. However, it was always at the back of his mind to serve his motherland. Hence, he decided to join the Indian Army, which was his childhood dream. He was selected for Indian Army in his very first attempt. He had to undergo rigorous training at the Indian Military Academy, Dehradun, for 1 year in 1998. He did exceedingly well during the training with A grading in shooting and horse riding. After successful completion of his training, Captain Naveen Nagappa joined 13th Battalion of the Jammu and Kashmir Rifles during 1999. It was during the same time when Kargil War commenced. Captain Naveen Nagappa volunteered to participate in the Kargil War. He fought very courageously during the war, destroying many enemy bunkers and eliminating many enemy soldiers. He had to fight the enemy in biting cold without food or water for more than 60 hours. With disregard to his personal safety, he charged upon the bunker occupied by the enemy. During the final assault, he got severely injured by enemy grenades, sustaining injuries to both his legs. He has lost his greater toe in the left leg with partial paralysis, deformation, and shortening of his right leg. After 21 months of hospitalization and 8 surgeries, he was declared medically unfit to serve in the army and was thus removed from the army. Due to his bravery shown during the Kargil War, he was awarded the Gallantry Sena Medal. Ladies and gentlemen, I take immense pride in presenting to you Captain Naveen Nagappa, who is going to share his experiences and thoughts on how each individual can give back to his country. For many of us, serving our country is just a dream. But for Captain Naveen Nagappa, Hello. A very warm good afternoon to all of you. Before I start my speech, I'd just like to narrate the journey which happened from Hyderabad airport to the place where I'm staying. I was glad that Mr. Raja Krishna had come to pick me up, and that is the time he was narrating the kind of service Rotary as an organization has been giving back to the society. I was really amazed. Sitting here, what I came to know was, if Indian Army has fought the Kargil War and 4 other wars before that, Rotarians and Rotary as an organization has been fighting for the last 33 years of this epidemic called polio, and it's been largely successful. I would like to really congratulate all the Rotarians for this fantastic effort. Coming back to my experience of Kargil War, as you all know that in my introductory speech, I am a mechanical engineer by profession. Wanted to join the army right from the beginning because I strongly believe that 2 stars on my shoulder are better than thousands in the sky. I always wanted that stars on my shoulder, which means I always wanted to don the uniform. After completing my engineering, I went to Indian Military Academy, Dehradun, where I was trained for a period of 1 year, after which I joined a unit called 13th Battalion Jammu and Kashmir Rifles. That unit was located in midst of Kashmir, और कश्मीर के मध्य भाग में था, हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल में नहीं थे. मैंने जब यूनिट को ज्वाइन किया, दैट वाज इन जनवरी 1999. जब भी कोई ऑफिसर एक यूनिट ज्वाइन करता है, यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, हिंदी, इधर वेज, इधर वे, ओके. जब भी कोई ऑफिसर एक यूनिट को ज्वाइन करता है, ही इज गिवन अ बडी इन द सेंस
वी ऑलवेज ऑपरेट इन पेयर्स. जब भी हम कोई अटैक करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, एम्बुश करते हैं, हम रात में करते हैं. हो सकता है जब हम रात में ये ऑपरेशन कर रहे हो किसी एक को गोली लगे और कोई इसको देखे ना. सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज ऑपरेट इन पेयर्स. In the sense, if somebody, one person gets shot, somebody else realizes, his buddy realizes that his buddy has got shot. So it becomes easy for retrieval. Similarly, a buddy was given to me. His name was Sham Singh. I used to profoundly call him Shame. So from January 1999 to May 1999, we were in that Kargil in the Pattan sector, not in Kargil. Once Operation Vijay, what we call it as Kargil war, started, we were asked to come to that sector. We were asked to come to Kargil sector and deploy ourselves. When I narrate this incident, there are a lot of people who ask me, आप एक जगह पे थे, युद्ध के क्षेत्र में आप लोग जा रहे थे, आपको डर नहीं लगा, आपके माँ बाप की चिंता नहीं हुआ क्या आपको? तो let me give a small introduction of the Kargil war, rather a small background of the Kargil war, why Kargil war happened. श्रीनगर से ले हाईवे जो है करीब 400 किलोमीटर का रास्ता है, विच इज़ कॉल्ड एज नेशनल हाईवे 1A. एंड उस रास्ते के आसपास बहुत सारे पहाड़ी है. वो पहाड़ी ऐसा है, इतना ऊंचाई है उसका कि हम लोग उसको मैन मेंटेन करते हैं. इन द सेंस कि वो हिलॉक के ऊपर जो लोग बैठते हैं, जो अपना सैनिक बैठते हैं, उनको पूरा सामग्री नीचे से पहुंचाया जाता है कि उनका खाना हो गया, उनका एमिनेशन हो गया, उनको कोई मेडिसिन चाहिए, सब कुछ नीचे से ऊपर भेजा जाता है. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज व्हेन देयर इज इंटेंस स्नो, बहुत बर्फ जब गिरता है तो हम लोग उस पोस्ट को मेंटेन नहीं कर पाते, हम लोग उस जगह को छोड़ के नीचे आ जाते हैं. सिमिलरली द आवर काउंटर पार्ट्स दैट इज पाकिस्तानीज विल ऑल्सो डू द सेम थिंग. दे ऑल्सो वेकेट देयर पोस्ट एंड वो नीचे चले जाते हैं. जब बर्फ पूरा पिघल जाता है, व्हेन इट्स winters, when it's summers, when the snow melts, when the snow starts to melt, that is the time we go and occupy our post, they come and occupy their post. But in the year 1999, what they did was, they outfitted us, they came and rather than occupying their post, they came and occupied our posts. It was a gentleman's agreement which was being followed for many years, but this time they betrayed us. When Indian Army came to know about this, it sent a small team of one officer and 4 other men for a reconnaissance mission. उनका खाली मिशन ये था, टास्क ये था कि उन लोग जाके ऊपर जाके वो वहाँ पे कितने लोग हैं वो जाके चेक करके आना था. Since it was only a reconnaissance mission, only 5 people had gone. They had carried limited arms and ammunition. बहुत कम ammunition था उनके पास. जब वो ऊपर गए, they were taken aback. They were shocked to see that there are large number of peaks which are occupied by the Pakistanis and in all fortified bunkers with large amount of arms and ammunitions. When these people reached there, this team was led by an officer called Lieutenant Saurabh Kalia and 4 other people of 4 Jat regiment. When they went up there, Pakistanis noticed them and the firefight started. And once the firefight started, these people had very less ammunition, so they fought till they expended their ammunition. जितना उनके पास एमिनेशन था तब तक वो लोग लड़ते रहे. उसके बाद उनको युद्धबंदी बनाया गया. दे वर टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर. लेडीज जेंटलमैन, दे वर कैप्चर्ड एंड व्हेन देयर बॉडीज वाज हैंडेड ओवर, इट वाज 21 days. And 21 days later, when the bodies of Lieutenant Saurabh Kalia and 4 other jawans of 4 Jat was handed over back to the Indian Army, the entire world was shocked. The reason being, their post-mortem report said their skull was fractured, their ears were chopped off, their eyes were gouged out, their teeth broken, tongue cut, lips cut, and hot iron rod pierced into their ears. Cigarette butt marks, उनको पूरी बदन पे सिगरेट से जलाया गया था. एंड जब उनके शरीर में कुछ जान बचा ही नहीं था, तब उनको गोली मार के हत्या कर दी गई एट पॉइंट ब्लैंक रेंज एंड हैंडेड ओवर टू इंडियन आर्मी एज अ गिफ्ट फ्रॉम द पाकिस्तानी फोर्सेस. That is the time Indian Army we told ourselves, the harder you hit us, the stronger we are going to bounce back, and bounce back we did. Due to shortage of time, I will not be able to narrate the entire experiences because the war was fought over 4 different sectors over a stretch of around 200 odd kilometers, but I will restrict my experiences of just my unit, which is 13th Battalion Jammu and Kashmir Rebels. जो अपना पहला अटैक था
हम 13 जैकरिफ ने जो पहला अटैक किया था वो किया था 0.5140 पे, उसमें मैं खाली रिजर्व पे था, मेरा कोई एक्शन नहीं था उस पर. द सेकेंड अटैक विच वी कैरिड आउट वॉज ऑन 0.4875. एंड नाउ व्हाट इज 0.4875? 4875 का मतलब ये होता है दैट इज एल्टीट्यूड ऑफ 4875 अबव सी लेवल. तो आप उसको समझ सकते हो कि कितना ठंड होता होगा वहाँ पे, कितना बर्फबारी होता होगा, कि कितनी हवा चलती होगी. एंड ग्रेडियंट जो उसका चढ़ाई है अराउंड 70 to 80 डिग्रीज होता है. तो वहाँ पे चलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है. बिकॉज आप यू आर कैरिंग एन आर्म्स एंड एमिनेशन ऑफ अबाउट 25 to 30 kgs यू आर कैरिंग ऑन योर बैक. दैट मेक्स द टास्क ऑल द मोर डिफिकल्ट. व्हेन वी कैरी आउट एनी अटैक वी कैरी आउट समथिंग कॉल्ड रिकॉनेसेंस. रिकॉनेसेंस का मतलब ये होता है जिस पहाड़ी को हम अटैक करने वाले हैं इससे पहले पहाड़ी पे जो अपने कब्जे में है उसको हम रात को चढ़ते हैं, पूरा दिन उनका ऑब्जर्व करते हैं कि वो लोग कितने स्ट्रेंथ में है, उनका तादाद कितना है, व्हाट ऑल एमिनेशंस दे आर कैरिंग, व्हाट इज द route which we have to follow if we have to attack. All this is decided, planned, we come down and then a task is decided. You all might have heard, आपने मूवी में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, पढ़ा होगा, जब भी हम वॉर की बात करते हैं, जब भी हम एक्शन की बात करते हैं, गोली चलना, यही सब बात करते हैं, मरना मारना, यही सब बात करते हैं. बट वॉट यू डोंट रियलाइज इज वॉट गोज थ्रू अ मेंटल ब्लॉक ऑफ अ सोल्जर. सोल्जर के दिमाग में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे, आप शायद आप लोगों को पता नहीं होगा. थोड़ी सी मैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहूँगा. 4 जुलाई 1999 को हमने अटैक करना था. तो 4 जुलाई की एक नज़रिया बताता हूँ आपको. मुझे एज अ कंपनी कमांडर ऑफ चार्ली कंपनी 120 बंदों को मोटिवेट करना है, उनको युद्ध में लेके जाना है. मुझे उनको ब्रीफ करना होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड अनपोस्टेड लेटर्स. अनपोस्टेड लेटर्स का मतलब ये होता है कि हर एक जवान, एज एन ऑफिसर आई हैव टू टेल द जवान कि आप अगर युद्ध से वापस नहीं आओगे तो आपके माता पिता को अपने कोई संदेश छोड़ना है, तो यू कैन राइट अ लेटर, लिव इट बैक. अगर आप युद्ध से वापस नहीं आओगे तो ये लेटर आपके घर वालों को पहुंचा दिया जाएगा. इट मे साउंड वेरी सिंपल, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इट इज नॉट ऑल दैट सिंपल. इमेजिन मेकिंग 100 and 120 people stand in front of you and telling a jawan that you may not come back from war. That means you may die in the war. No matter how strong an officer you are, you will blabber before telling this, giving these orders. However, it's a tradition which we follow. Lot many jawans wrote unposted letter. I also wrote a letter. After that, there is an again procedure which we call it as depositing the identity. In the sense, whatever I am carrying on myself, which can reveal my identity, that has to be deposited back. It looks like a simple task, but imagine there are 120 people, they are taking out their I-card and depositing. I-card is just one part of it. Just imagine a soldier, वो अपना बटुआ निकाल रहा है, वैलेट निकाल रहा है, जिसमें हो सकता है उसका माँ बाप का फोटो हो, उसका बीवी बच्चे का फोटो हो, वो उसको किस कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, शायद ये सोच के कि आगे उनको देख पाएगा नहीं देख पाएगा. इट इज सच एन इमोशनल सील. लेडीज एंड जेंटलमैन, to understand this, to experience this, you have to be there. Otherwise, you can only listen to it, you cannot experience it. That is the difficulty of a soldier. 4 जुलाई 99 की बात है, जब हम लोग अटैक के लिए जाने वाले थे. जो मैंने आपको बताया था, मुझे एक बड़ी दिया गया था, हिज नेम वॉज श्याम सिंह. वो तबीयत से डाउन था, बीमार था. He was not fully recovered because from the past 3 days he was suffering from fever. I told him he will not come to war because we were going on to a war, did not know how long it's going to take. I had given a message that Shyam Singh will not participate. So this Shyam Singh comes to me and quote unquote जिस हिसाब से वो बोला है, जो शब्द उसने बोला है, वही मैं आपके सामने रखना चाहूँगा. वो मुझे एज एन ऑफिसर मुझे आके मेरे से परमिशन मांग रहा है, मुझे आके बोल रहा है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी मुझे आके बोलता है, सब अच्छे दिन में आपके साथ था, अभी बुरा वक्त आया हुआ है, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? खुदा ना करे आपको कुछ हो गया तो मैं अपने घर में, अपने पलटन में मुंह कैसे दिखाऊंगा? ये श्याम सिंह की असल वर्ड है मेरे सामने. आप इस बात को समझ सकते हैं. यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट दिस कि अ पर्सन, कैप्टन नवीन नागप्पा was somebody else and Shyam Singh was somebody else. We did not know each other. We just knew each other for the past 6 months and that attachment was so strong.
उसका जोश देख के मुझे उसको साथ में ले जाना पड़ा. आई एग्रीड दैट ही कैन कम टू द वॉर एंड आई टुक हिम अलोंग. On 4th July 1999, before we went for the attack, what had happened was we have a tradition in which we hug each officer. जब हम हग करते हैं हर एक ऑफिसर को, मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वाई.के. जोशी के पास गया. He told me, नवीन, you take care of men, men will take care of you. ऐसे हर एक ऑफिसर के पास जाता गया. फाइनली व्हेन आई केम टू माय डियर फ्रेंड कैप्टन विक्रम बत्रा, वो गले लगने से पहले मुझे बोला कि गले लगना यार, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी. That is the time I realized, yes, I also may not come back from war. Ladies and gentlemen, let me tell you, before I launched an attack, we have our war cry. 13, हर एक कोई भी कार्य करने से पहले हम एक war cry, हम एक पुकार पुकारते हैं. जो अपने यूनिट का war cry था, वो दुर्गे माता की जय था. 4 तारीख रात होने से पहले, जब हम लड़ाई लड़ने से पहले, लड़ाई के लिए जब चढ़ रहे थे उससे पहले, जब मैंने दुर्गा माता की जय जो अपना war cry था पुकारा, एंड 100 बंदों ने साथ मिलके एक दुर्गे माता की जय पुकारा, एंड लेट मी टेल यू दैट वाज द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मूवमेंट एवर इन माय लाइफ. तब तक शायद वी हैड सम सोशल ऑब्लिगेशंस, वी हैड सम फैमिली कमिटमेंट्स, देयर वाज केयर एंड कंसर्न फॉर द फैमिली, बट आफ्टर वी सेड दैट वॉर क्राई दुर्गे माता की जय, देयर वाज ओनली वन थिंग इन आवर माइंड, दैट वाज नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस, वी हैव टू hoist tricolor on point 4875, the task which has been given to us. Ladies and gentlemen, when I say a feature, we have to attack. When I say point 4875, we have to attack. ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक बड़ा सा हिलॉक है, उसके ऊपर 4 बंदे, 4 एनिमी बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है. जब हम उस पहाड़ी को ऑक्यूपाई करने जाते हैं, उस पहाड़ी चढ़ते चढ़ते बहुत सारा दुश्मन ने बंकर और संकट बनाया होगा, उसको एक एक क्लियर करते 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 हमें पूरे टॉप पे जाना है. 4 तारीख रात को हम जब चल पड़े, 5 तारीख सुबह, अभी अंधेरा ही था, सुबह हुआ नहीं था पूरी तरह से, हम तब तक वहां तक पहुंच गए थे कि उनका पहला बंकर शुरू हो रहा था. द फर्स्ट बंकर हैड जस्ट स्टार्टेड एंड दे हैड नॉट रियलाइज्ड वी हैव कम. पाकिस्तानियों को पता नहीं था कि हम वहां तक पहुंच गए. जितना मैं नजदीक में गया, देन आई रियलाइज कि इफ आई टेक 120 पीपल एट वंस, दे विल रियलाइज देयर विल बी लॉट ऑफ नॉइज, देयर विल बी लॉट ऑफ साउंड, एंड पाकिस्तानीज विल कम टू नो दैट वी हैव कम देयर. सो व्हाट आई डिड वाज, आई मेड अ स्मॉल टीम ऑफ 10 पीपल लेड बाय मी, एंड आई गिव देम चूज देम टारगेट. द फर्स्ट 3 संगठन जहां पे था, मैंने उनको टारगेट दिया कि लेफ्ट साइड कौन अटैक करेगा, सेंटर वाला मैं अटैक करूंगा, लास्ट वाला कौन अटैक करेगा. ये मैंने उस 10 बंदों में बांटा, एंड वी चार्ज्ड. व्हेन आई से चार्ज, बिफोर दे कुड रियलाइज, बिफोर दे कुड वेक अप, वी चार्ज्ड एट देयर बंकर इन अ सरप्राइज अटैक एंड लॉब्ड ग्रेनेड्स एंड फायर्ड आवर AK-47 इनटू देयर बंकर्स एंड किल्ड ऑल ऑफ देम. जब अपने कब्जे में ले रहे थे, हम उसको सैनिटाइज बोलते हैं, हम अपने कब्जे में ले रहे थे, जब हम उसको सैनिटाइज कर रहे थे. सैनिटाइज का मतलब ये होता है कि वहां पे जितना दुश्मन का बॉडी गिरा रहता है, देयर एनिमी बॉडी हैव टू बी टेकन आउट. इफ दे हैव केप्ट एनी बॉम्ब्स देयर, इफ दे हैव केप्ट एनी माइंस देयर, दैट हैज टू बी डिफ्यूज्ड, एंड द वेपन्स व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स हैव टू बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज सैनिटाइज. जब मैं सैनिटाइज कर रहा था, मैं पीछे मुड़ के देख रहा था कि जो हम बाकी दो जो बंकर है ऑक्यूपाई किया हमने, वो सैनिटाइज हो गए कि नहीं. मैं पीछे मुड़ के ऐसा देख रहा था. दैट इज द टाइम आई केम टू नो, देयर वाज, आई कुड सी one of my soldier had fallen down with his face downwards. My head was telling me कि oh God, let him be alive, at least let me get treated, but my heart was telling that guy was no more. Just put yourself in my shoes. I run towards that person. It's the young sun rays which are falling on his head. The moment I run towards him and turn his body, it was none other than Sham Singh, who was my buddy. Ladies and gentlemen, let me tell you, that was the most harsh moment that I have ever come across. And just imagine the apathy, agony of an officer. You can't even cry for your buddy. I wanted to scream my lungs out. I wanted to cry loudly, but I couldn't do that because there are 120 men of yours, whom you are leading, are looking at you. If as an officer, if as a leader, you start crying, you start shouting, they will lose the faith in fighting the war. So to keep their morale up, I couldn't even cry. मुझे उससे कितना बुरा लगा होगा आप समझ सकते हैं. जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, मुझे चोट लगने के बाद, तब मुझे पता चला कि श्याम सिंह had kept a chit in his pocket which read, he had kept a chit in his pocket, उसमें ये लिखा था, ये जिंदगी भी क्या है जिंदगी मौत के बिना, ये जिंदगी भी क्या है जिंदगी दुश्मन को मारे बिना. लेडीज जेंटलमैन, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी में हो सकता है. जो मैं आपकी एक्सपीरियंस के बारे में बताया हूं, दैट वाज 4th नाइट वी हैड अटैक्ड.
फिफ्थ अर्ली मॉर्निंग की बात मैंने आपको बताई। फिफ्थ पूरा दिन ऐसा युद्ध चलता रहा, हम लोग अटैक करते रहे, उनका काउंटर अटैक चलता रहा। फिफ्थ पूरा दिन ऐसा चला, फिफ्थ रात को भी अटैक काउंटर अटैक चलता रहा, सिक्स्थ मॉर्निंग भी चलता रहा। सिक्स्थ आफ्टरनून माय कमांडिंग ऑफिसर came on radio set and gave me a message. He asked me, Naveen, you have had your food last was on 4th afternoon. Now it is almost 6th afternoon. You have not had anything. Do you want some food to be sent upstairs? मुझे पता था कि ऊपर चढ़ के आना कितना मुश्किल भरा हो सकता है। खाना क्योंकि नीचे पकता है, पूरा खाने को ऊपर पहुंचाना बहुत बड़ी मुश्किल वाला काम है। लेकिन एमिनेशन जो है, एमिनेशन को हम एक मध्य जगह पे एक स्टोर करके रखते हैं जिसको हम एमिनेशन डंप बोलते हैं, वहाँ से एमिनेशन आना ईजी है। हम लगातार 2 दिन तक लड़ाई लड़ रहे थे तो अपना एमिनेशन कम होता जा रहा था। तो मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को वापस मैसेज दिया, सर खाने की चिंता मत कीजिए, मुझे एमिनेशन की ज़रूरत है, आप एमिनेशन और भेजिए। Ladies and gentlemen, you would like to understand कि how did we survive without eating for more than 24 hours, and it was just 6th afternoon, the war carried on till 7th afternoon. Let me tell you, जब हमें भूख लगा था, it is not that मुझे physical strain हो रहा था. Physical strain is the last thing in your mind, it's the mental strain which takes you. When one of my soldiers had injured both the legs and I had put him on a stretcher and trying to send him back, that is the time he says, साहब मुझे माफ कर देना, आखिर तक आपके साथ नहीं लड़ पाया। That was the time I was emotionally drained. जब एक मेरी जवान के पास शेल फटा था और उसका पूरा पेट छिल गया था, and I was trying to push his intestine back into his stomach, he says, साहब मैं जिंदा तो रहूंगा ना, अपने बीवी बच्चों को देख पाऊंगा ना। That is the time my morale was fully down. When a soldier had to breathe his last on my lap, that is the time I was totally drained out. Physical strain is just a state of mind. हम लोग कैसे अपने बुक को मिटाते थे, जहां जुलाई के महीना होने के बावजूद भी वहां पे बर्फ पड़ा रहता था। बर्फ का जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरा शेलिंग की वजह से काला काला हो रखा रहता था। गॉड फॉरबिड किसी को चोट लगा है, किसी का खून उस पर गिरा है तो वो लाल हुआ रहता था। उस लेयर को हम हटा के नीचे वाला जो आइस था उसको खा के हम जिंदा रहे हैं, हमने लड़ाई लड़ी है। आई डू अंडरस्टैंड कि वी आर ऑलरेडी लेट, so I don't want to get into too many details because there are n number of speakers who are about to speak after me. So I would like to wind up by one last incident, how I got hurt. Otherwise, there are plenty of other incidents which I can narrate and keep on narrating. 7 जुलाई की बात है, 7th जुलाई हम लड़ाई को इतनी दूर तक ले गए थे कि 7th मॉर्निंग तक हम इतनी नज़दीक थे दुश्मन के एंड इतनी जीत के करीब कि एक ही एक बंकर बचा हुआ था। देयर वाज ओनली वन लास्ट बंकर ऑफ द एनिमी लेफ्ट, हैड वी कैप्चर्ड दैट वी वुड हैव 1.4875 एंड उसके बगल वाला बंकर में मैं बैठा हुआ था। आई वाज सिटिंग इन अ बंकर लाइक दिस, देयर वाज अ बिग बोल्डर एंड ऑन द अदर साइड वाज द लास्ट बंकर ऑफ द एनिमी। वेरेवर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी आई यूज्ड टू पिक माय AK-47, climb over that boulder, fire and then duck down. 7th early morning what they did was they lobbed a hand grenade. आपने मूवी में देखा होगा हैंड ग्रेनेड को ऐसा पिन निकालते हैं, ऐसा फेंकते हैं। That hand grenade was lobbed and that hand grenade landed right in front of my feet where I was sitting. To give you a perspective of how a hand grenade functions, it has got a time lag of 4 seconds. जब आप उस पिन को निकालते हो, it has got 4 seconds to blast and its killing radius is 10 meters. That means if a grenade is lobbed here, after 4 seconds it will blast and anything in and around 10 meters will be blown apart, will be shredded into pieces. Such a hand grenade is lying right in front of my feet. I had 2 options which are all ruled out. I couldn't have possibly got up. अगर मैं खड़ा हो जाता, एनिमी मुझे देख लेता और मुझे मार दा, गोली मार देता। I couldn't have kicked it. मैं उसको लात भी नहीं मार सकता था because there were my jawans on the other side. So the only thing I could do was I picked up the grenade and tried to lob it back. Now just imagine yourself, आप किसी भी festival में you light a cracker and if it's a small cracker, how far you run. But here is a live grenade lying in front of my feet. I had to pick it up and lob it back. You might appreciate to throw something, you need a proper projectile, you need to get a proper swing, which I didn't get because I was standing in a very constrained space. मैं एक छोटी सी जगह बैठा हुआ था, मैंने उठा के ऐसे फेंकने की कोशिश किया, but unfortunately it hit the boulder and rolled back, again fell at right in front of my feet. Ladies and gentlemen, when I say this, believe me when I say this, it's not melodramatic.
उस 4 सेकंड में प्रॉब्ली मैं 2 सेकंड ऑलरेडी गवा चुका था एंड आई हैड ओनली 2 more seconds to react एंड दैट इज द टाइम आई टोल्ड माई सेल्फ नवीन यू आर नॉट गोइंग टू लिव यू आर नॉट गोइंग टू सी अनदर डे nobody has seen death as closely as I have seen touch wood it should not happen with anybody but here live grenade lying in front of my feet and about to blast those 2 seconds believe me when I say this मुझे अपना माता पिता याद आए मुझे अपने बहनें याद आए भाई याद आया all my childhood came in front of me all my friends came in front of me what I thought at that point of time was मैं यही सोच रहा था कि मैं अगर ऐसे ही बैठा रहा इफ आई कीप सिटिंग लाइक दिस एंड द ग्रेनेड ब्लास्ट माई एंटायर अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी विल बी ब्लोन ऑफ what will be sent to my home losing their son would be very difficult to come to terms for my parents उनको मेरे माता पिता को मुझे खोने का दुख तो रहेगा ही रहेगा बट मगर ऐसा ही बैठा रहा और ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा उड़ जाएगा तो मेरे घर क्या भेजेंगे वो लोग सम बोन पीसेस सम मसल पीसेस पुट इनटू अ गनी बैग एंड सेंट होम हाउ वुड माय पेरेंट्स फील अबाउट दिस they would have been devastated they wouldn't have pardoned me for the rest of their lives I didn't want to put them through so much of pain and agony all I wanted and all I prayed to God was God I know I'm not going to survive but however for God's sake please keep my face intact I want my parents to see my face for the last time even if I go back home as a body ऐसा मैंने if I prayed and that was the last prayer on my lips and then I write down to my right like this and the moment I write down to right like this the grenade blasted for the next 5-10 seconds nobody realized what's happening because the intensity of the blast was so high there was sound of ringing in my ear there was dust accumulated all around there was smell of cordite smell of burnt flesh the boulder which was next to me was all splattered with blood not knowing whether I am alive or not am I in a hallucination I am in this world or I am somewhere else I did not know but all I could hear was somebody charging towards me I realized the enemy is charging towards me by God's grace I was hale and hearty not hale and hearty but I was alive with badly injury to my legs just to avoid that counter attack जो दुश्मन मेरे पास चार्ज कर रहा था उनको रोकने के लिए मैंने अपने फिर से AK-47 उठाया उनको उनके पास फिर से फायर करने की कोशिश किया दैट इज द टाइम कैप्टन विक्रम बत्रा ऑल्सो केम रनिंग टू माई पोस्ट वहाँ पे दौड़ के आए वहाँ पे उन्होंने भी फायरिंग शुरू किया जो अपने नीचे जवान थे उन्होंने भी फायर खोल दिया somehow we managed to stall the counter attack जो पाकिस्तानियों ने काउंटर अटैक लॉन्च किया था उसको हमने रोका कैप्टन विक्रम बत्रा was my senior तो he ordered me to go back seeing the state of my legs तो मुझे नीचे आना पड़ा एंड नीचे कैसे आता दोनों पैर में चोट लगा हुआ है तो all I could do was I crawled for 150 meters imagine pulling your body with both the legs injured for 150 meters. I had to literally pull my body through my hands and crawl for 150 meters. And once I crawled 150 meters, I sat behind a boulder to see the state of my leg कि मेरे पैर में क्या चोट लगा हुआ है मुझे देखना था उस बोल्डर के पीछे इतना मोटा शूज़ पहनते हम वो शूज़ में कुछ नहीं बचा हुआ था जितना बचा हुआ था उसमें से मैंने लेफ्ट शू खोला तो बहुत सारा पैर जल गया था शू जल गया था एंड राइट साइड का जब मैंने फुट को शू को खोला उसमें इतना खून भरा हुआ था कि जैसे मैंने वो शू को खोला जो नीचे वाला जो आइस जो सफ़ेद आइस होता है व्हेन आई ओपन माई शू लाइक दिस देयर वाज सो मच ऑफ ब्लड वूज्ड आउट ऑफ दैट आइस विच वाज white turned into red that was the kind of blood flow I had and my leg was literally dangling like this if somebody had pulled with some effort it would have come apart that is the time two of my jawans came running to me they picked me up like a gunny bag and they were running from one boulder to another boulder but I could see the Pakistanis shooting they didn't want an officer to be evacuated from that place they wanted me to die there I could see the bullets piercing the ice right next to me but however by God's grace and by the blessings of you all I was brought to a reasonable distance when my jawan was carrying me on my shoulder you will understand what is my mentality I was turning back and looking कि अगर मेरा पैर नीचे कट के गिर जाए तो मैं उसको लेके जाऊंगा बैग में डॉक्टर को दूंगा स्टिच कर दो दैट इज द स्टेट ऑफ मेंटालिटी आई वाज इन आई डिड नॉट नो व्हाट्स प्रैक्टिकल व्हाट्स इम्प्रैक्टिकल बाय द गॉड्स ग्रेस आई वाज बॉट डाउन आई गॉट हर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग 7th July अर्ली मॉर्निंग आई गॉट हर्ट बाय द टाइम आई वाज बॉट डाउन इट वाज लेट इन द इवनिंग देयर वाज टू मच ऑफ इन्फेक्शन विच हैड स्प्रेड देयर वाज टू मच ऑफ ब्लड लॉस एज अ रिजल्ट आई वाज प्लेस्ड इन डेंजरसली इल लिस्ट एंड एनी ऑफिसर और अ जवान who is placed in dangerously ill list has to be evacuated to the nearest hospital immediately. तो वहाँ से मुझे एम्बुलेंस में एक जगह गुमरी ले गया गया गुमरी से रात को मुझे उधर ही सुलाया गया एंड नेक्स्ट डे आई वाज टू फ्लाई टू श्रीनगर
जब मुझे सुबह सेडेटिव देके सुला दिया गया था, जब मुझे सुबह उठाया, हेलीकॉप्टर वॉज वेटिंग फॉर मी. इन अ स्ट्रेचर आई वॉज पुट ऑन अ हेलीकॉप्टर एंड हेलीकॉप्टर वॉज टू टेक मी टू फ्रॉम गुमरी टू श्रीनगर. जब मुझे हेलीकॉप्टर में बिठाया, मेरे साथ एक नर्सिंग असिस्टेंट था एंड दैट हेलीकॉप्टर हैड टू फ्लाई लो. इट कुडंट हैव फ्लाइड वेरी हाई. It had to fly low because if they fly very high, the Pakistanis might observe them and shoot a missile. So we had to fly in a low altitude. When we were flying in a low altitude, my nursing assistant woke me up and says कि साहब डॉक्टर ने उठने से मना किया हुआ है, आपका रील का हड्डी का पता नहीं कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंजरी, वी डोंट नो, बट डॉक्टर हैज एडवाइज्ड यू नॉट टू गेट अप. बट बताया सब वो देखिए 0.4875 पे तिरंगा लहरा रहा है. लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज द टाइम I felt, at that point of time I felt, Naveen, you have left a legacy here. You have created history, no matter how small. Whenever Kargil war will be spoken about, whenever 0.4875 will be spoken about, your name will be there. I couldn't resist myself. I was very happy. I just didn't care after that whether I live or die. The task which was given to us has been accomplished. ये सोच के मैं जहाँ पे लेटा हुआ था ऐसे उठा, सल्यूट किया उस नेशनल फ्लैग को. जब मैं ऐसे नीचे लेटने वाला था, when I was about to lie down, that is the nursing assistant, that's the time nursing assistant फिर said कि साहब इसके लिए हमने कीमत चुकाई है. Then I asked him, साहब नर्सिंग असिस्टेंट को मैंने पूछा कि what is the कीमत, हमने क्या कीमत चुकाई है. That nursing assistant ने बोला साहब कैप्टन विक्रम बत्रा नहीं रहे. Probably that was the time, you know, I lost my conscious. The next time I woke up was in Srinagar hospital. Srinagar hospital में they couldn't treat me well. The infection had spread to a large extent. There was too much of blood loss. Again, I was in a state of uncertainty. Had to be flown to Delhi. Delhi hospital में when I went there, they somehow stabilized. They made it sure that I didn't pass out. They made sure that my leg was totally deformed. But out of those 21 months which I stayed in hospital, the first 6 months were totally bedridden. And God forbid it shouldn't happen with anybody. When I was there in the hospital for 6 months bedridden, I was totally devastated. It can happen with anybody. I thought I was a very strong officer. I was very strong officer who will not let my morale go down. But 6 months in hospital can do a lot of damage. ऐसा एक समय आ गया था जब मैं अपने आप को कोस रहा था, भगवान को गाली दे रहा था. I started asking God, I started cursing myself. God, why me? I was better dead than made to go through this. Why are you giving me this trouble? There are plenty of time when I abused God. There was a time when there was an entirely different moment in my life. As you all know, during the Kargil war, it's the young officers who have made the supreme sacrifice. A lot of young officers didn't come back from war, in which my dear friend was one of them. I wouldn't like to take his name. His mother was also equally close to me. She was very close to me in the sense, whenever she used to give me a call to his son, she would talk to me more than to his son. That was the amount of closeness I had with auntie. That officer, that friend of mine, did not come back from war. वो वहीं पे शहीद हो गया. जब मैं हॉस्पिटल में ऐसे लड़ रहा था अपने जीवन से और 6 months बेड रिडन था, मोरल डाउन था, that is the time I came to know that aunt is coming to meet me. I was given an information that she'll come and meet me. When I came to know about this, I started thinking, if auntie comes tomorrow and asks me, नवीन तू तो वापस आ गया, उसको उधर छोड़ के क्यों आया, तो मैं क्या बताऊंगा? How will I face her? What am I going to answer her? How will I answer her? Next day, auntie comes, sits with me for good about 1.5 years. She spoke to me rest about his son. She spoke to me on every other aspect about my state. How do I intend? What do I intend doing after I go home? Everything she spoke to me, but not a word about her son. And after 1.5 hours, she was about to move away. She had almost gone to the door. I couldn't resist myself. I felt I have to do this. I called auntie and said, Auntie, I'm really sorry. Your son was fighting in a different sector. I was fighting in a different sector. There was no way I could have helped him. I couldn't have helped him in any way because we were fighting miles apart. I'm sorry he didn't come back from the war. So auntie turns and tells, Naveen, the best gift a son can give to his mother or motherland is his son's body coming back wrapped in tricolor. That's the best gift I have ever received. Ladies and gentlemen, why I would like to highlight this is, maybe I'm running short of time, I'll wind it up. What I would like to tell is, it's not only the soldier who sacrifices, it is
the sacrifice is done also by the parents. A soldier sacrifices his life and is gone, but the family has to suffer throughout the rest of their lives. Ladies and gentlemen, 527 people sacrificed their life in the Kargil war. There are thousands of them who got injured, for whom life has never been the same again. What you are going to listen to my story, what you are going to honor me, it's not the honor of Captain Naveen Nagappa, it is honor to those 527 people who have sacrificed their lives and thousands of them who got injured. Coming back to giving back to the country, the topic of my speech today was giving back to the country. Soldiers have done their bit. 527 people have given their lives just in Kargil war. They have done their bit. Now what I'd like to ask you is, are we really worthy of those sacrifices? Do we really deserve those sacrifices? I would like to congratulate Rotarians for doing such a yeoman service to the entire nation and the society at large. But what I would still urge upon you people, what I would request upon you people is, we have taken too much of pains to educate our children. हमने अपने बच्चों को प्री इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश किया है. स्कूलों में हम सब कुछ पढ़ाते रहे, उनको सब कुछ बताते रहे, बट उसके बाद की जो लड़ाई लड़ी गई है, 47 में हो, 61, 62 में हो, 71 में हो, 99 में, हमने उन्हें कभी कोशिश नहीं किया कि हम अपने बच्चों को इसके बारे में बता सके. Our effort, our endeavor should be to educate our children to respect a soldier, and that will come by educating your children the amount of sacrifices which has been made to uphold the territorial integrity of this nation. The second thing and the last thing which I would like to urge upon you people is, you all are seniors. I am sure once you get up in the morning, you go to, आप पूजा रूम में जाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो कि मुझे अच्छी तरह से रखो, मेरे परिवारजनों को अच्छी तरह से रखो, हमें सेहत दो, सब कुछ मांगते हो. मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, बट उसमें से आप सिर्फ एक लाइन जोड़ सकते हो. इसके साथ जो भी आप अपने भगवान से मांग रहे हो, उसके साथ एक और कृपया कीजिए, एक और लाइन जोड़ दीजिए. भगवान से ये पूछिए, Oh dear God, my soldier is suffering a lot. At least give him some certain relief, and I'm sure the prayers of all of you will be listened and the soldier will be put at ease. Finally, I would like to thank the city of Hyderabad and all the Rotarians here for giving me this wonderful platform to having raised the sacrifices of the soldier and bringing it forth to all of you. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. How's the Josh? How's the Josh? హలో ఫ్రెండ్స్, భరతమాత రక్షణలో అసువులు పణముగా పెట్టి పోరాడిన వీరుడు, మన ధీరుడు, మన నవీన్ నాగప్ప. మనమేం ఇవ్వగలము వీరికి కృతజ్ఞతాపూర్వక స్టాండింగ్ ఒవేషన్ తప్ప. ఇప్పుడు అందరూ నిలబడి తప్పట్లు కొట్టండి సార్. దిస్ ఈజ్ ద టైం.